Hello students, so this is your Act 1 Scene 2. This scene is in Belmont where Portia lives. Says Portia, says Nerissa. Nerissa is her helper, okay? And they are in a room and they are talking. So now Portia is saying that by my troth, Nerissa, my little body is aware of this great world. It means he is saying, oh Nerissa, my poor little body is tired of this great big world. Actually, Portia is not tired physically. She might be exhausted and mentally disturbed. That's why she is saying like that. So Nerissa replied to Portia, you would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. It means that you would be tired, madam, if you had bad luck rather than wealth and good luck. You should be tired if you would have problems as much as you have good fortunes. And yet, for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. It means that, but as far as I know, people suffer too much who has nothing and who has everything. मतलब जिनके पास सब कुछ होता है वो भी इतना ही सफ़र करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होते हैं. It is no mean happiness, therefore, to be seated in the mean. Superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. It means the best way to be happy is to be in between. ओके, इन द मीन मीन्स बिटवीन, मतलब या तो बहुत रिच मत रहो या तो बहुत पुअर मत रहो, मतलब मिडिल में रहने का, तो आप हैप्पी रहोगे. व्हेन यू हैव टू मच वेल्थ यू वुड गेट old sooner, your hair become gray sooner, but one who is having just enough, they live longer. Okay, so now Portia say, good sentence and well pronounced, मतलब हाँ हाँ अच्छा बोला तुमने. Nerissa say, they would be better if well followed. It would be better if you actually applied it in your life. नाउ पोर्सिया अब थोड़ा सुन कर के उसको लगा कि हाँ कहना तो आसान है बट जिस पर बीतती है वो सिचुएशन वही समझ सकते हैं, है ना. तो अब पोर्सिया बोलती है, इफ़ टू डू वर एज ईजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू. अगर कहना इतना आसान होता, करने जितना आसान होता. चैपल्स हैड बीन चर्चेज एंड पुअर मेन्स कॉटेज प्रिंसेस पैलेस. तो चैपल्स मतलब स्मॉल रूम जो होते छोटे छोटे, तो वो चर्चेज जैसे होते और जो गरीब पुअर मेन्स के कॉटेज होते वो प्रिंसेस के पैलेस होते. इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ऑन इंस्ट्रक्शंस. एक अच्छा प्रिस्ट, एक अच्छा जो प्रिस्ट होता है वो अच्छा हो तभी होता है जब वो अपना इंस्ट्रक्शंस जो दूसरे को वो प्रीच देते हैं, टीचिंग्स देते हैं, वो खुद फॉलो करें. I can easier teach 20 what were good to be done than be one of 20 to follow mine own teachings. तो I can teach easier, मैं 20 लोगों को आराम से मतलब टीचिंग कर सकती हूँ कि हाँ क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बट उनमें से एक लोग को भी एक्चुअल में वो चीज़ कर पाना मतलब मुश्किल होता है. मतलब 20 लोगों को सिखा पाना आसान होता है रेदर कि आप उस टीचिंग को खुद अपनी लाइफ में फॉलो करना इट्स डिफ़िकल्ट. द ब्रेन में डिवाइज लॉज फॉर द ब्लड बट अ हॉट टेम्पर लीव्स और अ कोल्ड डिक्री सच अ हेयर इज मैडनेस द यूथ. तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, वो हार्ट को बोलते हैं कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, वो रूल्स बनाते हैं. लेकिन बट हॉट टेम्पर मीन्स यंग, ठीक है, यहाँ पर यंग की बात हो रही है. लेकिन जो यंग होते हैं तो वो काफ़ी टेम्पर्ड होते हैं, राइट. वो मतलब जल्दी से कुछ भी डिसीज़न लेने वाले होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं. यंग इम्पल्सिव होते हैं तो यहाँ पर उसे एक हेयर रैबिट से कंपेयर कर रहा है. जो यंग रैबिट होता है वो इतने इम्पल्सिव होते हैं. तो जो भी हमारा जो ब्रेन है वो रूल्स बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं हमारे लिए. लेकिन हमारा जो यंग है, जो इम्पल्सिव हमारा बिहेवियर रहता है यंग का, वो उस लॉ को, उस रूल्स को सबको तोड़ देता है.
ठीक है, टू स्किप ओवर द मैसेज ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल, बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड. ओके, सो नाउ शी इज सेइंग अबाउट दैट थिंकिंग लाइक दिस वॉन्ट हेल्प मी. ओके, नाउ वो अब तुरंत मतलब इस डायलॉग से यहाँ बोलते बोलते वो अब इस पॉइंट पर आ गई, चूज़ मी अ हस्बैंड. ये सारी बातें मेरे हस्बैंड चूज़ करने के से रिलेटेड नहीं हैं. ठीक है, मतलब अब ये एक्चुअली इस चीज़ से परेशान है, इस वर्ड से परेशान है हस्बैंड, क्योंकि उसे शादी करनी है. ओके, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सूटर्स वगैरह आए हुए हैं अलग अलग कंट्री से, और यहाँ पर उसके पापा ने, जो अब उसके पापा नहीं हैं, वो मर चुके हैं, तो उन्होंने 3 कास्केट बॉक्स जो है वो बनाया हुआ है. और इसमें से जो करेक्ट कास्केट होगा, अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, वो अगर करेक्ट कास्केट सेलेक्ट करता है तो वो पोर्शिया से शादी कर लेगा. और पोर्शिया इस बात से परेशान है कि पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा, और मतलब जो करेक्ट कास्केट चूज़ कर लेगा मेरी उससे शादी हो जाएगी. एंड शी कांट हेल्प, वो कुछ नहीं कर सकते, उसे ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा, तो इस वजह से वो परेशान है. तो नाउ यहाँ पर वो कह रही है ओ मी द वर्ड चूज़, मतलब वो एकदम सैड हो गई और बोलती है चूज़ वर्ड, ये मेरे लिए नहीं बनाए. आई मे नीदर चूज़ whom आई वुड नॉट रिफ्यूज़ whom आई डिसलाइक. मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे मैं चूज़ नहीं कर सकती, और मैं जिसे पसंद नहीं करती हूँ उसे मैं रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकती. सो इज़ द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्ब्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर. तो अब वो बोल रही है कि नाउ शी इज़ फीलिंग कंट्रोल्ड बाय हर डेड फादर. Is it not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse none? तो isn't it very hard, Nerissa? वो Nerissa से बोलती है कि मैं किसी को ना ही पसंद कर सकती हूँ और ना ही जो मुझे नहीं पसंद है उसे रिफ्यूज़ कर सकती हूँ. तो अब समझ में आया यहाँ पर कि वो क्यों इतनी सैड है, क्यों मतलब एग्जॉस्टेड फील कर रही है, क्योंकि उसके पापा ये उसके लिए एक रूल बना करके गए हैं कि पोर्शिया की शादी किससे होगी, इस वजह से वो परेशान है यहाँ पर थोड़ा. नाउ नरेसा से, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस एंड holy men at their death have good inspiration. Therefore, the lottery that he had devised in these 3 chests of gold, silver, and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly, but one who shall rightly love. But okay, तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं पहले. चलो, सो नाउ नरेसा इज सेइंग, वो उसे थोड़ा कन्विंस कर रही है, पोर्शिया के माइंड को वो कन्विंस कर रही है थोड़ा बोल करके. सेज नरेसा, सेज पोर्शिया, वो बोल रही है योर फादर वॉज एन एक्सट्रीमली मोरल मैन एंड रिलीजियस person. Okay, and that kind of religious people get odd ideas on their death time. That's why your father's idea was to have a lottery, or you can say a game with 3 boxes. The suitor who can figure out whether to pick the gold, silver, and lead boxes will solve your father's riddle, and that suitor will be your man. So no one will ever choose the right box who doesn't deserve your love. So now she is trying to convince here कि जो बंदा तो सही कास्केट सेलेक्ट करेगा वो श्योर डिज़र्विंग होगा, तभी वो सही कास्केट चूज़ करेगा. अगर वो डिज़र्विंग नहीं होगा, मतलब तुम्हारे लव के लिए डिज़र्विंग नहीं होगा, तो वो सही कास्केट चूज़ नहीं कर पाएगा. Okay, so that's why she is saying here like that. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? So now she is saying that okay, so do you like any of the princely suitors who have come? So यहाँ पर 6 प्रिंस आए हुए हैं, ठीक है, 6 कंट्री से अलग अलग लोग आए हुए हैं. तो अब नरेसा थोड़ा सा पोर्शिया का मूड को स्विच करने के लिए उससे पूछती है ओके, ये सब छोड़ो, अब बताओ कि ये जो 6 प्रिंस आए हुए हैं इसमें से बताओ तुम्हें कौन पसंद है. ना पोर्शिया से,
I pray thee, overname them, and as thou namest them, I will describe them, and according to my description, level it my affection. So सी से कि तुम अब उसके ठीक है जो भी लोग आए हुए उसके नाम लेना स्टार्ट करो एंड मैं तुम्हें डिस्क्राइब करूँगी उसके बारे में और मेरे डिस्क्रिप्शन से तुम समझ जाना कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ. Okay, so now here Nerissa see. There first there is the Neapolitan prince. Okay, what do you think about this prince? Portia say, oh, that's a bold indeed, cold indeed, for he doth nothing but talk of his horse, and he makes it a great appropriation to his own good parts that he can show him himself. So now Portia is telling that. About this Neapolitan prince that he is like a wild horse and he always talks about is his horse only. He thinks that it is a great job that he can show his horse by himself. He is very proud, that वो अपने घोड़े को जूता पहना सकता है खुद से. Now Nerissa say, then there is a County Palatine. So what do you think about County Palatine? Portia, he doth nothing but frown, as who should say, and you will not have me choose. He hears merry tales and smiles not. So now Portia is saying that he does nothing but frown, means no expression at all, strange सा expression चेहरे पर हमेशा बना कर रखना, no happiness, no sad, मतलब अजीब सा बिल्कुल, न्यूट्रल. तो एज इफ ही वॉन्ट्स टू से, जैसे वो ऐसा लगता है जैसे वो पोर्शिया से बोल रहा हो दैट इफ़ यू डोंट वांट टू मैरी मी आई डोंट केयर. एंड सी इज सेइंग, पोर्शिया इज सेइंग कि वो फनी स्टोरी सुनता है लेकिन स्माइल नहीं करता है. I fear he will prove the whipping philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. Now she is saying कि मुझे डर है कि वो ओल्ड हो करके अजीब सा बूढ़ा बनेगा, मतलब एक क्राइंग फिलोसफर, ठीक है, क्राइंग फिलोसफर बनेगा वो एज अ ओल्ड मैन. Now she is saying that I had rather be married to a death's head with bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. No, I would rather be married to a skull with the bone in its mouth than to either of these men. God please protect me from these two. Who? County Palatine and that Neapolitan prince. Now Nerissa is asking about how say you by the French Lord Monsieur Le Bon. Monsieur Le Bon, Monsieur Le means यहाँ पर मिस्टर, फ्रेंच में मिस्टर को बोलते हैं. ओके, Le Bon. तो Portia says, God made him and therefore let him pass for a man. Since God has created him, so okay, we will say him man, otherwise he has no quality of man. In truth I know it is a sin to be mocker, but he. So she is saying that yes, I know making fun of others is sin, it's crime, I should not do that, but I can't help. Why he has a horse better than a Neapolitan's, a better bad habit of frowning than the Count Palatine. Now she is saying that he is that Neapolitans जितना बात करता था अपने घोड़े के बारे में और काउंट पैलेटाइन जितना फ्राउनिंग करता था वो उसका डबल है. हिज दोनों ही क्वालिटी उसमें है, नेपोलिटन्स वाले भी क्वालिटी है और काउंट पैलेटाइन की भी क्वालिटी है. ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन. इट मीन्स दैट बहुत सारे वो अलग अलग लोगों के जैसा क्वालिटी है उसमें, लेकिन उसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है. ही हैज़ एवरीबडी एल्सेस कैरेक्टर बट नॉट हिज ऑन पर्सनैलिटी.
Okay, so if I also saying he falls straight or capering, he will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husband. Now she is saying that अगर कोई bird singing करती है वो डांस करना स्टार्ट कर देता है and he behave like that he is fighting with his own shadow. ओके एंड ही शो ऑफ एक्चुअली वो इस चीज़ को शो ऑफ करते हैं कि वो अपने शेडो से फाइट करते हैं एंड इफ़ आई शुड मैरी हिम अगर वो उससे शादी करती है तो ऐसा उसे ऐसा लगेगा वो 20 हस्बैंड से शादी कर रहे हैं क्योंकि 20% की क्वालिटी इसमें एक बंदे में है दैट्स वाई से सेइंग लाइक दैट इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम अगर इफ़ ही वुड hated her to Portia, then she will forgive, she will accept it. But for if he love me to madness, I shall never require him. अगर वो मुझे प्यार करता है, I can't love him back. I can't accept it. Okay, so now Nerissa is saying, what say you then to Falcon Breeze, the young baron of England? Now she is asking about England. Then Portia say, I say nothing to him, for he understand not me, nor I him. He hath neither Latin, French, nor Italian, and you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in English. So now here she is saying that we don't talk because we don't understand each other. He does not speak Latin, French, or Italian, and you know very well that I don't know English. Right? Okay, so he is proper man's picture, but Alice, who can converse with the dumb so how oddly he is suited. I think he bought his doublet in Italy, his round horse in France, and his bonnet in Germany, and his behavior everywhere. So now he is saying that his dressing sense is strange. You can see here. I think he got his jacket in Italy, his trousers in France, and his hat in Germany, and his manner and behavior from everywhere. Okay, so now Nerissa is asking about a Scottish lord, his neighbor. Portia said that he had a neighborly charity in him, for he borrowed a box of the ear of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. So now he is she is saying that I think he is forgiving nature. He took punch from the Englishman and he said that now he is not able, but when he will be able to punch, he will pay with the help of Frenchman. So here you can see that Shakespeare is making fun of the French who always promised to help the Scottish at the time of the fight against the English. Okay. Now next, Nerissa. How like you, the young German, the Duke of Saxony's nephew? Portia, very wily in the morning, when he is sober. He is terrible in the morning when he is sober. Sober means here that he is not drunk and affected by alcohol. Okay, so in the morning, वो बहुत ही terrible होता है जब वो ड्रिंक नहीं किया हुआ होता है एंड मोस्ट वाइली इन द आफ्टरनून और उससे भी ज़्यादा वर्स तो आफ्टरनून में होते हैं व्हेन ही इज़ ड्रंक जब वो ड्रिंक किया हुआ होता है व्हेन ही इज़ बेस्ट ही इज़ लिटिल वर्स देन अ मैन और जब वो अपने बहुत ही अच्छा मतलब बेस्ट पॉइंट पे होता है एकदम तो वो उस टाइम लिटिल वर्स होता है एक इंसान से एक मैन से एंड व्हेन ही इज़ वर्स्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन बेस्ट और जब वो वर्स्ट होता है एक्चुअल में तो वो एक एक एनिमल से एक बेस्ट से भी मतलब उससे भी बेकार होता है
and the worst fall that ever fell. I hope I shall make shift to go without him. So now she is saying that if we got married, it would be worst thing, and I would not accept him. I am sure I could find a way to go on without Nerissa. If he should offer to choose and choose the right casket, you should refuse to perform your father's will. If you should refuse to accept him. So now Nerissa is saying that if he play that those guys, if he play the game and chooses the right box, this right casket, okay, these three casket, but then you reject him, you will disobeying your father's last wishes in this way. Portia says, therefore, for fear of the worst, I pray thee set a deep glass of Venice wine on the contrary casket, for he will devil be within, and that temptation without. I know he will choose it. I will do anything, Nerissa. I will marry to a sponge. So now Nerissa Portia is saying that I know. So please put a nice big glass of white wine. Here Ranis means white wine. Okay. On the wrong box, on the wrong casket. I know he will get tempted and choose that one, that wrong one. I will do anything rather than marry a drunk. Sponge means drunk. So now Portia is saying to Nerissa that I don't want to get it. I don't want to get married with these people who drink a lot. Okay. So now Nerissa says, you need not fear, lady, the having any of these lords. They have acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their home, and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort man than your father's imposition depending on the caskets. So now Nerissa is saying her that you don't have to worry about any of these lords. Why? Because she is saying that my lady, they have all told me that they want to go home and looking forward for another way to win you and marry you, rather to choose the right casket as per your father's will. So why Nerissa is saying like that, and why that all six people want to go? Okay, and they don't want to take participate in this challenge to choose the correct casket. Why? Because there are some rules that is very which are very difficult. Okay, we will talk about these rules in next video, but now just know that there are some rules which is very difficult. So that's why all six princes want to go and they don't want to take participate in this challenge. Okay. Okay, so here Portia is saying, if I live to be as an old as Sibylla, I will die as chaste as Diana unless I be obtained by the manner of my father's will. So now Sibylla. Sibylla was well known for her extreme old age, and Diana was a Roman goddess of purity and virtue. Now Portia is saying that she would remain unmarried all her life like Sibylla, or till a man select the right casket and makes her a virtue girl just like a Diana. In short, she is saying that I will die as an old lady unless I can be won according to rules set by my father's rule. I am glad this parcel of woes are so reasonable, for there is not one among them but I dote on his very absence, and I pray God grant them a fair departure. I am glad these suitors are sensible enough to stay away from these casket and challenges. The only thing I like about them that is they are no longer in this game. I wish them all safe trip to home. Now Nerissa say, do you not remember, lady, in your father's time a Venetian, a scholar and a soldier that came hither in company of the Marquis of Montfort? Portia.
Oh, okay. So now no, Nerissa is saying that do you remember a Venetian scholar and soldier who accompanied the Marquis of Montfort here once came when your father was still alive? Then Portia replied, yes, yes, it was Bassanio, as I think he was so called. Now Portia says, yes, yes, that was Bassanio. I think that was his name. Now, Nerissa, true, madam. If all the man that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady, then Nerissa says, yes, madam, that's the one. He deserves a beautiful wife more than all the other men I have ever seen. Portia से I remember him very well and I remember him worthy of thy praise. मतलब yes I remember, और जो तुम उसके बारे में तारीफ कर रही हो he deserve, वो बिल्कुल वैसा ही है. Then a serving man enter. Portia उस सर्वेंट से पूछती है, how now, what's news? कुछ न्यूज़ है बताओ. Serving man, the four strangers seek for you, madam, to take their leave, and there is a fourth runner come from a fifth, the prince of Morocco, who brings word the prince, his master, will be here tonight. The four suitors are looking for you, as they can say goodbye to you, madam, and there is a messenger representing a fifth one, and he will come by tonight. Portia, if I could bid the fifth welcome with so good a heart as I can bid the other four farewell. Now she is saying that if I could say hello to the fifth one as happy as I will say goodbye to the first four, I would be very happy he is coming. I should be glad of his approach. He has, if he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than wive me. Come, Nerissa, Sarah, go before whilst we shut the gates upon one who another knocks at the other. If he is as good as a saint but is black like a devil, he hear my confession then marry me. Means वो मुझे मतलब वो ब्लेस करे, रेदर वो मुझसे शादी करे. ठीक है, अगर कोई सेंट जैसा है मतलब साधु जैसा और कॉम्प्लेक्सन में डेविल मतलब ब्लैक कलर है बिल्कुल, तो वो बेटर कि वो मुझे श्राइव करे रेदर कि वो मुझसे मतलब शादी करे. एंड नाउ फिर वो कहती है चलो चलते हैं यहाँ से नेरेसा. एज सुन एज वी शट द डोर फॉर वन शूटर अनदर वन स्टार्ट नॉकिंग, और फिर वो लोग वहाँ पर से चले जाते हैं. ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. सो अगर इन शॉर्ट में बात करें तो इस स्टोरी में क्या है, दिस सीन 2 ये बेलमोंट की कहानी है, मतलब बेलमोंट का सीन है. यहाँ पर नेरेसा एंड पोर्शिया दोनों बातें कर रही हैं और 6 प्रिंस जो है अलग अलग जगह से आए हुए हैं. बट उसके पापा ने 3 कास्केट सेलेक्ट किया हुआ था कि अगर जो राइट कास्केट चूज़ करेगा जो भी पर्सन वो पोर्शिया से शादी करेगा. एंड इसी वजह से पोर्शिया थोड़ी सैड है, परेशान है कि पता नहीं कौन होगा वो जो राइट कास्केट चूज़ करेगा और उसे उससे शादी करना पड़ेगा, और जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है. तो इस मैटर में पोर्शिया एंड नरेसा बात कर रहे हैं. बट एट लास्ट नरेसा बताती है कि नहीं, वो सभी लोग जो आए थे वो लोग जाने वाले हैं और वो लोग इस कास्केट जो कंपटीशन है, चैलेंज है, इसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं. किस वजह से? क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ और भी मतलब इस गेम के रूल्स हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मालूम होगा. ठीक है, तो और एक सर्वेंट आता है फिर और उसे बताता है कि हाँ वो जो हैं आपके 4 शूटर्स वो जाने वाले हैं और आपको गुड बाय कहना है, और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर से चले जाते हैं.